नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं हूं यकेश राजवीर, आपका अनअकैडमी और YouTube एजुकेटर। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टिंटन एबी। टिंटन एबी, अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी द लर्निंग एप्लीकेशन पर, वो भी फ्री में। और जो टाइमिंग होती है दोस्तों, वो टाइमिंग आपको मुझे फॉलो करने पर पता चल जाएगी। अनअकैडमी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों, अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट के पेड कोर्सेज भी हैं हमारे पास, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस रेफरल कोड को यूज कीजिएगा और आप मजे से डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस या फिर पेड क्लासेस जो डेली होंगी एंजॉय कर सकते हैं टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल के साथ। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिंटन एबी वाला ये जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं आपके लिए कवर क्या क्या करूंगा। दोस्तों, मैं कवर करूंगा आपके लिए ब्रीफ समरी इस पोम की, इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपके एग्जाम का पार्ट हो सकती है, और क्रिटिकल एनालिसिस, किसी ने और ने क्या कुछ कहा है इस पोम के लिए। एग्जाम पॉइंट्स तो वो तो ऑलवेज होते हैं मेरे वीडियोस में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले टाइटल की, बिकॉज टिंटन एबी नाम है इस पोम का। कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोम इज लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी। स्टूडेंट्स, तो ये तो एक अभी छोटा सा टाइटल है, लेकिन अगर दोस्तों मैं आपसे इसके पूरे वाले टाइटल की बात करूं, कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोम, एज यू कैन सी द कंप्लीट टाइटल इज, मैं यहां पर लिखता हूं दोस्तों, अ फ्यू माइल्स above, a few miles above Tintern, Tintern, Tintern Abbey, a few miles above Tintern Abbey, on revisiting, V-I-S-I-T-I-N-G, on revisiting the bank students। तो ये बैंक वो वाला नहीं जहां पैसा जमा करते हैं, ये बैंक है वो वाला बैंक of the bank of students, the banks of its, the banks of the WYE, ये दोस्तों एक रिवर है, WYE, during a tour, D-U-R-I-N-G, during a tour, T-O-U-R, and then students July 13, J-U-L-Y, July 13, 1798, ये है इसका टाइटल। दोस्तों, इट मीन्स कि ये जो पोम है ये एक रीविजिटिंग है, यहां से आप समझिए रीविजिटिंग। इट मीन्स कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है यहां पर पहले आए होंगे 1793 के टाइम पीरियड में, 1793 के टाइम पीरियड में विलियम वर्ड्सवर्थ यहां पर आए होंगे। टिंटन एबी, टिंटन एबी की स्टूडेंट्स मैं बात करूं अगर, ये एक बिल्डिंग है। आप नेट पर डालें अगर गूगल पर, टिंटन एबी आपको एक बिल्डिंग शो होगी। दिस इज अ बिल्डिंग जो इंग्लैंड और वेल्स की बॉर्डर पर पड़ेगी, वेल्स की बॉर्डर पर ये पड़ेगी टिंटन एबी, ओके। एंड WYE, दिस इज अ रिवर। आई थिंक स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पोएम है रिविजिट है टिंटन एबी, जहां पर वो एबी थी, और वहां मतलब जो बैंक है WYE रिवर का जो बैंक है, वहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ की ये रीविजिटिंग है। दोस्तों, अगर आप इसमें पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, दिस इज द पिक्चर ऑफ टिंटन एबी, किसी पेंटर ने बनाई है और मैंने आपके लिए यहां पर मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसका जो कंप्लीट टाइटल है, ये जुलाई 13, 1798 की रिविजिटिंग है, और फर्स्ट विजिटिंग आई होप वो 1793 के टाइम पीरियड में रही होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पोम की। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम के बारे में आपको याद रखना चाहिए, द पोम दैट इज रिटन इन डेकासिलैबिक ब्लैंक वर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि डेकासिलैबिक ब्लैंक वर्ड्स क्या है, एक बार गूगल पर डाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्लीज देखिए, मैं बता सकता हूं, बट आप अगर एक बार डालें खुद से जाने ज्यादा अच्छा लगेगा।
basically on the poem, so you can see different kind of elements are there, जैसे कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग, और कभी कभी दोस्तों इस पोएम को अगर कहा जाए तो ये पोएम कुछ लिरिकल क्वालिटीज के साथ भी है, राइट। सो इस पोएम को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों कहते हैं? रिविजिटिंग, और ये जो वाई रिबिल्ड का स्टूडेंट्स बैंक है वहां की रिविजिटिंग है, और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की वहां पर जो विजिट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उनके साथ उनकी सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ। हाँ, पोएम में आपको कहीं नहीं मिलेगी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, हाँ सिर्फ इंडिकेशन मिल जाएगा, वो भी वर्ड्सवर्थ के थ्रू। जैसे एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है ना, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा लास्ट डेसेस एंड ऑल, सो वहां पर आपने देखा कि एक साइलेंट लिसनर होगा। सो ऑन द वे, ऑन द सेम वे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ इज द साइलेंट लिसनर। ये पोएम स्टूडेंट्स आई कहां पर थी? सो ये पोएम आई थी लिरिकल बैलेड में, LYRICAL&BALLADS, लिरिकल बैलेड्स, और ये आया था 1798 में। लिरिकल बैलेड जॉइंट कंपोजिशन था किसका किसका? सो S.T. कॉलरिज का और W का, सो सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक जॉइंट कंपोजिशन था। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने स्टूडेंट्स ओनली 4 पोएम्स कंट्रीब्यूट की थी और 19 पोएम्स हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कंट्रीब्यूट किया था। एंड आउट ऑफ स्टूडेंट्स अगर ये देखा जाए कि 19 एंड 4 पोएम्स, सो अगर इसमें से देखिए सो 23 पोएम्स कंप्लीटली बनते हैं। अब एक चीज और याद रख लीजिएगा, ओपनिंग, सो फर्स्ट पोएम एंड लास्ट पोएम। सो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, एंशिएंट मार्नर, सो ये पोएम है क्या? कॉलरिज की। सो ये पहली पोएम है इस लिरिकल बैलेड की, और जो लास्ट पोएम है, सो लास्ट है वो है टिंटन एबी, जिसे आप पढ़ रहे हैं। गॉट इट? और स्टूडेंट्स ये बहुत ही बढ़िया पोएम है, मैं भी आपको बताता हूं। द पोएम कैन बी कंसीडर्ड एज द एग्जांपल ऑफ टोपोग्राफिक पोएम, टोपोग्राफिकल पोएट्री स्टूडेंट्स। टोपोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल का मतलब होता है कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, जैसे कोई जो स्टूडेंट्स लोकोमोटिव डिस्क्रिप्शन, इसे समझते हैं ना, लोको डिस्क्रिप्शन, लोको, सो लोको रिफर्स टू लोकेशन, लोकेशन का डिस्क्रिप्शन। अब जैसे ये टिंटन एबी का बैंक है, सो देखिए एक लोकेशन, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन कैन बी सीन ऑन द लैंडस्केप और प्लेसेस डिस्क्रिप्शन कैन बी सीन, राइट। और इसमें से बहुत सारी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है टिंटन एबी में, जैसे आई हैव learn to look on nature not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still sad music of humanity. So these are the important lines from the poem. Another one, I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts. Another important lines from Tinton Abbey. Therefore, I am still a lover of the meadows and the woods and the mountains and that we behold. Lover, students. So now you can easily understand William Wordsworth is describing himself as being the lover of nature. Right? And even high priest of nature, he also declares himself of the same poem. These are the lines, students. These are the opening lines of the poem, Tinton Abbey. 5 years have passed. 5 साल गुजर गए. 5 summers और 5 गर्मियां गुजर गई. With the length of 5 long winters और 5 लंबे लंबे जाड़े के दिन भी बीत गए. And again, और एक बार फिर से I hear these waters, और एक बार मैं फिर से यहां पर आया हूं और मैं सुन सकता हूं the lapping of water. Lapping, so पानी की छपछपाहट. Once more I can feel rolling from their mountain springs. और ये जो water है वो कहां से आ रहा है? यहां से ये जो water आ रहा है ना, so lapping here, lapping I can hear. And yes, waters rolling from their mountain springs with spring students, so that refers to spring students, so that refers to citadel, or you can say कि जो झरना होता है, right? With a soft inland murmur rolling from their mountain springs. यहां से रोल करता हुआ जो ये वाटर आ रहा है, once more I can hear.
with the soft inland murmur, और soft inland murmur भी कोई murmuring भी सुनाई दे रही, मे बी स्टूडेंट्स की कहीं पर कोई छोटी सी कोई छोटा सा कोई जीव हो जो फ्लावर्स एंड ऑल पर थोड़ा मरमरिंग कर रहा हो, या फिर इस वाटर की मरमराहट, क्योंकि होती है ना जब वाटर गिरता है फिर बहुत सारी आवाज आती है, सो लैपिंग छपछपाहट वो वाटर की. डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, क्या मैं फिर से इन लॉफ्टी क्लिप्स को देख सकता हूं. दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, जो बहुत ही वाइल्ड और इस एकांत सीन पर मुझे इंप्रेस कर रही है. Thoughts of more deep seclusion, and this kind of scenery that is bringing for me thought of deep seclusion, and connect the landscape over there. Now Wordsworth is indicating over there, वहां पर देखो जहां पर ये क्षितिज बन रही, स्टूडेंट्स क्षितिज, अगर देखें कि यहाँ पर अगर पोच है आपका और यहाँ पर ये रिवर है, सो कहीं ना कहीं ये जो बहुत सारे पेड़ होते हैं तो यहाँ पर हमें लगता है धरती और आसमान मिल रहे हैं. सो ही इज सेइंग impress thoughts more deep seclusion and connect the landscape. Landscape connect हो रहा है कहां से? With the quiet of the sky. Sky से, इस आसमान से जुड़ रहा है वो. The days come when I again repose here. और ये वो दिन आ गया जब एक बार फिर से मैं यहां पर डिफरेंट प्लेसेस पर वंडर कर रहा हूं, यहां से वहां. Under this dark sycamore, और उस पेड़ के नीचे sycamore, this is a kind of tree, and view these plots of cottage ground, और इस यहां से मैं देख सकता हूं those plots of ground, उस ground को देख सकता हूं, right, वो cottage देख सकता हूं जो ground में बनी हुई है, indicating towards this cottage कि yes I can see that cottage from this particular place. These orchard tufts, और ये orchard के जो tufts हैं इनको भी मैं देख सकता हूं. Everything I can see, and wow, what a beautiful scene, Wordsworth is saying. What at this season? और वैसे देखा जाए इस सीजन में है क्या? What at this season? What is there in this season on these trees with their unripe fruits? हाँ, अभी जो फल हैं वो अभी पके नहीं हैं, अधपके फल, कच्चे फल लगे हुए हैं. Are clad in one green hue, and yes they are as green as the you can see the leaves are, yes, and ये जो फल है बिल्कुल भी दिख नहीं रहे, because these all fruits are green, so that's why जो ह्यू है वो मैच कर रहा है ना, वो लीव्स का एंड ट्रीज एंड ऑल का, सो वो बिल्कुल मैच कर रहा है. And lose themselves mid crops and copses, and lose themselves मिड क्रॉप्स एंड कॉप्सेस. होता है कभी कभी कि बहुत सारी जो फसलें हैं वो मिडिल में शो हो रही है, राइट, ग्रोव्स एंड क्रॉप्सेस, मिड ग्रोव्स एंड क्रॉप्सेस, तो बहुत सारी जो फसलें हैं वो मिड में मतलब अभी पकी भी नहीं, अधपकी खड़ी हुई है. फसलों में भी जैसे बालियां निकल आती है ना खेतों में, धान के खेतों में, गेहूं के खेतों में, सो दैट समथिंग लाइक दैट. नाउ सी, once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, little lines of spotty wood run wild. Now it's saying Wordsworth, once again I see these hedgerows, and now I can see these hedgerows. ये झाड़ियों वाली जो एक कतार बनी हुई है, once I can see. Wow, what a beautiful scene this is. Hardly hedgerows. हाँ, कभी कभी थोड़ा सा स्कैटर्ड है, सो रोज नहीं बना पा रही. लिटिल लाइन्स ऑफ स्पॉटी वुड रन वाइल्ड, और ये जो लाइन है बहुत ही वाइल्ड सो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ वहां ऐसे वैसे जा रही है, और ऐसे लग रहा है कि स्पॉटिव है, स्पॉटिव से बहुत फुर्तीली. These pastoral forms and these greenery, this forms, these fields green to the very door. Even कि अगर इन ग्रीनरी की बात किया जाए तो बिल्कुल packed with greenery and wreaths of smoke sent up, and between this greenery I can see the smoke somewhere. He is indicating कि oh my god, see there is smoke, जैसे होता ना ऐसे indicate, oh my god there is smoke. Wordsworth is indicating towards that particular scene. From among, wreath of smoke sent up in silence from among the trees. On this silence you can see among the trees there is also smoke with some uncertain notice, but I don't know why this smoke is there, because I can't understand I can't understand the masses of the smoke. As might seem of vagrant dwellers in the houses woods, it seems to me that maybe somewhere vagabond or some hermit or any other being, human being, so he may be there,
एंड प्रोड्यूसिंग फायर, जो उसके चारों तरफ वो हो सकता है कि वो बैठा हो. सो यस, इट मे बी एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स, कोई हो सकता है कि राहगीर हो जो वहां पर बैठा हो, आराम कर रहा हो. इन द हाउसलेस वुड्स, वहां पर बिल्कुल जहां पर कोई घर नहीं, वहां पर आराम कर रहा हो. और ऑफ सम हार्मिट केव, या फिर किसी संत महात्मा की गुफा हो सकती है. वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, जहां पर हर्मिट अकेले में, एकांत में, ध्यान मग्न होकर के वहां केव के पास बैठा होगा. इट मे बी. नाउ स्टूडेंट्स, सी अ फ्यू लाइंस. स्टूडेंट्स, ये तो ओपनिंग लाइंस थी जिनका मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया. But now see, these are the important lines. The anchor of my purest thought and nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of all my moral beings. Wordsworth is saying, whatever, जो भी मैं हूं, उस सब के पीछे इस नेचर का बहुत बड़ा हाथ है. The biggest role, the biggest contribution of the nature behind me, behind my life. This nature for me is the guide, the guardian, heart and soul, everything for being moral being. Now see students, from these lines you can easily understand that this is a dramatic monologue. So students, the lines are, my dear, dear friend, my dear, dear friend, and in thy voice I catch the language of my farmer heart. Got it? डोरोथी छोटी थी ना वर्ड्सवर्थ से. So it's like, my dear, dear friend, अरे मेरी प्यारी मित्र, मेरी प्यारी प्यारी मित्र, and in thy voice, मैं तुम्हारी आवाज में, I catch, मैं महसूस कर सकता हूं, I can feel the language of my farmer heart, the language of my boy's days. I can feel. May I behold in thee what I was once? अगर मैं तुमको देखूं तो क्या मैं अपने उस बचपन को, क्या मैं उस चाइल्डहुड बॉयज डेज को मैं याद कर सकता हूं? May I behold in thee what I was once? क्या मैं अपने आप को महसूस कर सकता हूं? So from here you can easily understand that this is dramatic monologue. There is no action from Dorothy, but often in lonely rooms, these beauteous forms has not been to me strangers. ये जो सुंदर, ये बहुत ही बेहतरीन और सुंदर जो प्लेसेस हैं, ये मेरे लिए कभी भी अनजान नहीं रहे हैं. बट ऑफन इन लोनली रूम्स, की जब भी मैं अकेले कमरे में रहा हूं, एंड मिड द डे, सुबह में या दोपहर में या शाम में, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, एंड इवन मिडेस्ट द क्राउड, midst the different kind of noise, I have awe to them. Always I have feel these all sceneries there. In hours of weariness, और जब मैं थक जाता हूँ, sensation sweet, so मैं अपनी आंखें बंद करके ऐसे लेट जाता हूँ अपनी कुर्सी पर, and then I can feel the touch, I can feel the nature that really gives me a kind of boon. The sounding cataract haunted me like a passion, and this sounding cataract refers to what, students? So this is cataract, झरना. The sounding cataract, this, ये जो कल छल छल की आवाज आती है water से, the lapping sound of the water, so that I have awe to them, and then sounding cataract haunted me like a passion. मुझे ये आवाज हमेशा मुझे अपनी तरफ लेकर के चली आई है. द टॉल रॉक, और ये बड़े बड़े माउंटेन जिनको देख करके मैं फील कर सकता हूँ. स्टूडेंट्स, ये माउंटेन हो सकता है कुछ ऐसे टाइप के माउंटेन्स, और यहाँ पर ऐसे कुछ ट्रीज एंड ऑल रहे होंगे स्टूडेंट्स, एंड फ्लाइंग बर्ड्स, मॉर्निंग इवनिंग जो भी स्टूडेंट्स टाइम है, क्या ब्यूटीफुल लगा होगा, राइट? सो यस, ही सेड दीज टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, और ये बहुत ही घने जंगल, ऑलवेज इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरी जिंदगी बदल गई है. बिकॉज वर्ड्सवर्थ ने एक बात कही थी, वन इंपल्स फ्रॉम वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ अ मैन ऑफ मोरल यू विल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन. कि वन इंपल्स फ्रॉम वर्नल वुड आपको इतना सिखा सकती कि जितना कोई नहीं सिखा सकता.
ये वर्ड्सवर्थ की बातें। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस पोम की सेंट्रल आइडिया की, सो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम? सो टिपिकली स्टूडेंट्स, द पोम इज written in Wordsworthian style, and the interactive relationship between the perceiving awareness, the mind of man and the nature. Students, conscious mind of human being can be seen. In poet's view, perception is much active and creative as passive and receptive. So students, ये पैसन जो है, जो response है, so that can be seen. So the poem that is in Wordsworthian style, and poet so interaction with nature, natural scenery and different aspect of nature. A beautiful ruined abbey, students. So abbey की अगर मैं बात करूं, so abbey, so this is a beautiful ruined abbey where poet is going to compose his poetry, and this is a kind of religious building, and इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच में स्टूडेंट्स वो जो यहाँ जहां पर बॉर्डर है वहां पर ये पड़ती है। 12th सेंचुरी की ये एक मॉन्यूमेंट है और आज भी एग्जिस्ट करता है, जहां पर वर्ड्सवर्थ ने पोम लिखी। बात किया जाए स्टूडेंट्स अगर कंपोजिंग की, सो कंपोजिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि 5 ईयर पहले एक बार विजिट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, देन रीविजिट एंड देन कलेक्शन, बिकॉज for Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. It takes its origin in tranquility, so that can be seen. Human soul, nature, Wordsworth, and these qualities can be seen. And the speaker of the poem, Wordsworth himself is. Right? And this poem, students, so that contains how many stanzas? So 5 stanzas are there on the poem and having different length. And students, you can see the shortest stanza on the poem, so that contains 9 lines, and the longest one, so 54 lines are there. 54 lines, so that is longest stanza, and 9 lines, so that is shortest stanza. So this is all about Tintern Abbey. Students, this particular poem, Tintern Abbey, so Wordsworth, he is relating his feelings, and even he is declaring that I'm the lover of nature, therefore I'm still a lover of meadows and woods and mountains and all the behold from the green earth. So he said, I'm the lover of nature, I'm the high priest of nature. He was rightly termed by Matthew Arnold the highest priest of nature, and even Wordsworth himself declares on this particular poem that I am the highest priest of nature. And Wordsworth के लिए Matthew Arnold ने भी कहा highest priest of nature. Now see students, Alfred Lord Tennyson, the Victorian poet, he has written Tears, Idle Tears, and Allen Ginsberg has written Wales Vegetation. So students, ये Wordsworth की Tintern Abbey को दोनों follow करने वाली poems है, Tears, Idle Tears, and Wales Vegetation. So these two are the poems by different authors, one by Allen Ginsberg and another one by Alfred Lord Tennyson, और ये influenced है William Wordsworth की इस style और writing से. Basically this is the monologue, because dramatic monologue, because I have already told the silent presence of Wordsworth's sister Dorothy Wordsworth can be felt. So that's why students, this is a dramatic monologue. The poem Tintern Abbey, so that is written in blank words. Blank words, students, so no rhyme, right? Blank words having no rhyme. Iambic pentameter, students, and yeah, this is natural speech, you can say, students, okay? And Wordsworth as a poet of nature, as a students, yeah, if we are going to talk about, so you can see worshipper of nature, devotee of nature, high priest of nature. So these all qualities can be seen in the poem Tintern Abbey, because he is describing the nature in so beautiful way that students, you can easily understand his quality of description is wonderful. And now students, thank you so much. Stay tuned with me and keep on watching, keep on learning, and do not forget to subscribe this YouTube channel. And even students, you can join my free special classes on Unacademy, the learning application, and paid classes, students, on Unacademy. For paid classes on Unacademy, what you have to do, so just students, you have to download Unacademy, the learning application, from Google Play Store, and then follow me there on Unacademy, and then you will get, students, wonderful study material, wonderful
live classes, interactive classes, students. So follow me on Unacademy and say goodbye to those recorded WhatsApp classes and enjoy unlimited learning with Unacademy. Thank you so much. Bye. Take care. Next day, next class में students फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.